हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राधा आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। ये ना सिर्फ फ्रेशर के लिए बट एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो जॉब अप्लाई करते हैं उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, सीवी। सीवी जो कि हमारा फर्स्ट मिरर होता है, हमारी फर्स्ट पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। और हम उसी में ही इतनी गलतियां करते हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं तो इस चीज पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम जस्ट हमारे पास वैकेंसी आती है और हम अपना कोई भी सीवी कैसे भी रिटर्न उसमें कंडीशन में फॉर्मेट कर देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एक प्रॉपर सीवी के लिए, जो अफेक्टिव सीवी जिसको हम कह सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक डॉक्यूमेंट शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं और इस टिप्स के ऊपर आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ ये आप जब भी अप्लाई करो किसी भी जॉब के लिए तो इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका जो भी सीवी है वो रिजेक्ट ना हो। राइट। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं कि जो हम सीवी में करते हैं और हमें उसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अपने बारे में बताना। जब हम अपने बारे में बताते हैं तो सबसे पहले आती है जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। जब मैच नहीं करती है तो भी हम कई बारी झूठी इंफॉर्मेशन फर्निश कर देते हैं, जैसे कि अगर किसी कंपनी ने बोला है कि उनको एमबीए स्पेशलाइजेशन ही चाहिए और आप एमबीए नहीं होते हो, तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोल देते हो। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एचआर जो है वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अबाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। तो वो आपके सीवी के बारे में भी देखेंगे कि आपने सीवी में जो इंफॉर्मेशन फर्निश की है, तो सबसे पहले आती है क्वालिफिकेशन। तो उसमें हमें झूठ नहीं बोलना है। एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट यू लुक लाइक डजंट मीन कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। लुक लाइक हियर मीन्स कि आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अपनी स्किल्स के बारे में क्या बताते हो, विच हाईलाइट्स आप में कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हाउ डू यू मैच विद द जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि आप अपने सीवी में अपने बारे में कैसे लिखते हैं। Having a personal statement that contradict itself, कभी कभी हम कुछ ऐसा मेंशन कर देते हैं जिसके बीच में इफ एंड बट की कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें जो भी स्टडी करने वाला है आपके प्रोफाइल को वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। तो इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को हमने अपने प्रोफाइल में अवॉइड करना है। और आप अगर देखें कि आजकल फैशन तो है ही, नेचुरली डिमांड भी है कि हम फोटोग्राफ लगाते हैं अपने प्रोफाइल में। तो कभी कभी हम जो फोटोग्राफ यूज करते हैं वो हमारे प्रोफाइल से मैच नहीं करती, वो फॉर्मल नहीं होती, वो ना आपका लुक वाइज फॉर्मल होती है ना ड्रेस वाइज फॉर्मल होती है। समटाइम्स यू डू अ लॉट ऑफ गुड मेकअप which I feel that one needs to avoid it. Religion, अभी हम मेंशन कर देते हैं कि I'm a Hindu person, I'm a Muslim, or I'm a Bengali, or I'm a Punjabi. No, my dear friends, we are not going to mention over here the religion, right? That shows that you are discriminating yourself. So we are going to avoid it. Age, yes, यहाँ हम एज के बारे में या तो लिखते हैं या झूठ लिखते हैं। ये इस तरीके का कुछ मुझे नहीं लगता कि we should mention about our age, because who is going through your profile can understand from your qualification and your experience what age will be yours. So we need not to mention it. Listing your sexual orientation. I'm a female, I'm a male. Oh, my dear friends, we are not going to mention over here, right? We don't require it at all. Too much of personal information. I'm a married guy, or I'm a married person, I'm a separated, or I'm a divorcee, I'm having 4 children with me, and all these things. So we are going to avoid this
non-requirement of this information. Political affiliation. Here we need not to tell anything that my relative is a chief minister or my relative is a into that kind of a some political relation or my family have. So that shows that you are taking advantage of that, and these things needs to be far off from your job. Odd hobbies. Sometimes we mention the hobbies like which really doesn't perfect go with the job profile. Like I'm very fond of shopping. I like making new friends. I like talking to strangers because I want to understand people's nature. No, we don't require this kind of hobbies. So we should avoid in our profile. Using negative language, bad, fault, hate, awful, aggressiveness, these words are the jargons we are not supposed to mention in our profile. That shows that of your mental attitude is not positive. And sometimes we list all our skills, knowledge, and experience into 8 to 10 pages. My dear, who has the time to read on that long, lengthy profile? So the profile needs to be very customized and specific according to job profile. Not should not be more than 2 pages, right? So the meaningless and annoying words, jargons, vague words, we are supposed to, avoid all this unnecessary information in our profile. Bad grammar, abbreviations. How do I understand if you write down some abbreviation? So we should write down the university name, college name, or other names in a full form, irrespective of your, um, how popular it is in abbreviation. So we should avoid that. We should avoid slang language in our profile. And we have to cross check for the spelling mistakes, right? We normally do no certain mistakes in grammar. Nowadays, Google is very smart enough to correct you at that time, but still you need to see to it, right? Unprofessional email address. Sometimes, I'll write down the, like my email is journey with my soulmate. So that's not professional email. Professional email should stand with the job profile you are into it, right? Links to a personal social media like Facebook and all and Twitter account, which is not yet required. Okay, if they ask for anything which is like furnish information regarding your professional site, social sites, then you can mention LinkedIn and all, right? And explaining a gap in the employment, right, with the odd reasons that there was some family issues or something like that, or I was going through some mental issues. So we are not supposed to come out with these kind of logics and all. So my dear friends, I hope you have a clarity of like what we need to avoid to mention in our profile, so that the profile should look like a positive, strengthened, and like a professional person. Thank you very much. Thank you.